Hello everyone and welcome to OASHUB Daily Current Affair Discussion. So ये जो पेपर हमें डिस्कस करिबा दैट इज द 7th of April because it was Sunday तो Sunday रे डिस्कशन हे पान so ये Sunday पेपर को हमें देखिबा 7th April रे पेपर को डिस्कस करिबा 7th April रो जेते इंपोर्टेंट न्यूज़ थला ताको हमें आर्टिकल डिस्कस करिबा 3 important articles अछि जोडे के डिस्कस करिया पड़ियो and 3 are the pretty lengthy one but I will discuss in short रो डिस्कस करिबी. First articles is the urban India's the water crisis in the urban India, the cause of the water crisis. Now this articles is written by Shankar Iyer. These two guys, Prabhu Chawla and Shankar Iyer, they are the great guys. What their articles are always having weighties and pretty good articles they always write. So both are pretty good writers. Jodi हम discuss करिबा. Prabhu Chawla is pretty awesome. जहाँ भी हो तो जदि आम ये आर्टिकल को डिस्कस करिबा तो जदि एथिरे आम देखिबा कोन ना से कहूँ बेंगलुरु एबे रिसेंटली न्यूज कोन आम देखिबा ना दैट इज द व्हाट कॉज ऑफ द वाटर क्राइसिस इन अर्बन इंडिया कि व्हाई न्यूज पी राजीव P. Rajiv, the Kerala Minister for the Industry and Law, that is CA कहिबा कथा कि Bangalore is facing the water crisis, not Kerala. The Kerala Minister, that is the P. Rajiv, who said that Bangalore and the Karnataka is facing the water crisis, not Kerala. So the software industry may shift to Kerala. So that was his. According to him, that Kerala is having 44 rivers, big and small 44 rivers. So Kerala does not have any water issue, so that those IT companies are there in Bangalore, they can shift to what? That means he was trying to the what IT industry to the Kerala. Okay, so that is why Shankar Iyer says that when exactly the Minister Rajiv said this kind of what sentence he pronounced, after some days, Thiruvananthapuram, the capital city of Kerala, faced the same problems like the Bangalore. जेबे ये कहले कि केरला पाखरे बहुत वाटर अच्छी 44टा रिवर अच्छी आम पाखरे वाटर किसी प्रॉब्लम नहीं किसी दिन भीतर न्यूज आसला that the what taps are dry, what getting dries, or what the people started agitated against the dry taps in the Thiruvananthapuram. That means none of the Indian city is safe from the water crisis. None of the water safe from the water crisis. Here in India, what as the Lok Sabha election is what going to happens, going to be in this summer. Everybody is in a pool mode, that is the poll mode. But you need to be, you need to be very precise that we are having what 100, that is MP seats in the urban region of India. That means the urban region must be focused. Out of 543, almost 100 seats as of now are the urban areas. So the urban areas need more attention. The cities like Chennai, Hyderabad, Delhi, Lucknow, Jaipur, where the real estate is growing so much and so faster. Especially, I would say again the Pune, when you come to Pune as well, Bombay, Pune. These cities are what they are the economic, I would say, but drivers of Indian economy. Okay, मतलब ये जो हमें देखिबा एमानकू but these cities are facing the waters what that is the water scarcity is going on. The tankers mafias माने आसुचंती एठी तुम देखिबो कि सकाळ हेला माने टैंकर्स माने रास्ता रे बुलुचंती टैंक धर की खाली के अनाउंस करूचंती काहा को वाटर दरकार आमे जोगई देबो. तो ये सब इंसिडेंट्स हमको देखिया को मिलुची इंडियन सिटीज रे धीरे धीरे. नीति आयोग तांकर रिपोर्ट रे कहया कथा 2018 के 21 मेजर सिटीज आर एक्सपेक्टेड टू व्हाट reach zero water level. Okay, zero water level affecting the 100 million peoples. नीति आयोग कहले शंकर आयर कह कथा कहले तांकर गोटे बुक अछि जो थर कि माई 2020 बुक सेथरे से कहले ता बुक रो ना होची that is the what gated republic, the gated republic जो बुक रो ना जो डॉक्यूमेंटेड से सेथरे मध्य कहचंती कि what would be the situation will happens to the Indian citizens on this particular front. ए फ्रंट रे कौन हम तेणु करके आम कह कि प्राइवेट आम कह जो प्लेयर्स माने एमाने कौन कर आजिकल वाटर रे मध्य आमको देखा मिलो सेल कर लगी पड़ते. ठीक अच्छे
सो ये कहवा कथा दैट इज व्हाट शंकर अय्यर कहवा कथा कि ऑलरेडी मु मोर डिफरेंट बुक्स रे कहिछि कि इंडियन सिटीज विल फेस द सेम. सो लाइक वाइज यदि हम देखा द वाटर क्राइसिस इन बॉम्बे तो से बॉम्बे कहवा कथा कि बॉम्बे रे यदि हम देखिदबा फॉर एग्जांपल Bombay one can what that is the encounter the unique phenomena that is on the VS mark tanker supplies offering RO treated water or the filter water across the urban habitants and the packed water. Number कौन ना 1800 डायल करो 1800 डायल करो आउ तुमको पैकेज वाटर बा ड्रिंकिंग वाटर मिल जाव. तो वाटर पर लोक इन्वेस्ट करने स्टार्ट कर वाटर गोटे बजेट रो पार्ट नथला. जदि आम कह जो मैंने होम डिलीवरी भी कहते दैट मीन्स वाटर नेवर बिकम्स मतलब it was never been a part of what the daily life budget of a people. Now it's been added into the daily life budget of a peoples of the household, where they are what exhorted to buy the bottles from the, I will say what, from the sailors. So Indian urbanizations यदि हमें discuss करवा that is the unplanned. So Shankar Iyer says that Indian urbanization is unplanned, that is amoebic in nature, amoebic in nature. So we need what planned infrastructure हमको दरकार. The cities like Bangalore, now present time रे यदि हमें cities देखिए Indian cities, there depends there what that is the water from the rural areas. And this is one of the important data says that the present Indian cities, those who are meeting their daily need of the water, they are getting the water from the what? From that is the at least 50 to 100 kilometer away. 50-100 किलोमीटर दूर पानी आरिकी सिटी डिमांड को फुलफिल कर. फॉर एग्जांपल बेंगलोर. So Bangalore is getting water from 100 kilometer away. Kaveri. Like Chennai is getting water from the what? That is Chalavoram and what? Viranam Lake. Out of city. Delhi depends on what? Sonia Bihar. So like this, Yamuna and Ganga. Like Bombay and 7 lakes that includes that is what Bhaitaran 150 kilometer away. Bombay depends Karachi. So like these are the what water bodies which are lies that means away from the urban area, and the water is being used for the urban space. तो ये मध्य आगु को जाएगी प्रॉब्लम ही परे. बट द ऑथर दैट इज शंकर आयर कहया कथा कि इन प्रेजेंट डे द डिमांड ऑफ द अर्बन एरिया मीटेड थ्रू द रूरल एरिया. सो सेम थी यदि हम देखा द परसिस्टेंस वेज or the combination of the ports availability and the patchy management जदि हम कहबा कि इंडिया जदि हम कहबा एई भले जदि आगु को चलिबा हमर पॉपुलेशन the more and more people will face the what lack of drinking water. So that means we are having almost समझते जानिए कि 16% of the world population are the 4% of the water resource. But China जदि same that means we are as मतलब as far as the Chinese population. But जदि हमें देखिबा these are the some data facts से कहा कथा. And we are receiving annual rainfall जदि हम देखिबा that is what an annual precipitations of 3,880 billion cubic meters, but the able to harness only 1,999 billion cubic meters को हमें harness करि पारुछे. Ground water extraction होची 249 billion cubic meter, which 89% goes to the agriculture. That means the data fact says कि we are having but we are one of the most populous country in the world. We are having one of the least drinking water. That means the resource बहुत हम पर कम अछि when we compare to the population. The rainfall that happens, majority of the water that goes wasted. Only the what I would say that is the what almost half of the water जदि हम कहबा जोटा के हम हार्नेस करू बाकी सब ground water exploitation, unabated exploitation of the groundwater that would be happens there, and that is also having in the visibles in the news. There is also what no dot studies and the solution किसी solution ऊपर focus करा जाऊ नहीं. So author says that जदि एई भले चलिबो कि किछि हम देश देखिया को मिले जो माने कि हमको solution दे पारिबे. So there is a but skewed and but excessive use of water by the farming. Okay. Now जदि हमें देखिबा now तो solution part को सॉल्यूशन पार्ट से कहया कथा कि सिंगापुर कथा जदि तुम नहीं जो
70% of the water जदि आम से रिसाइकल करिया बोली टार्गेट रखछि बाय 2070 by 2070 सिंगापुर विल बट दैट इज द बट तांकर टार्गेट है केते रिसाइकल करिवे 70%. The wastewater from the sewage and the pump through the 48 kilometer tunnel जो थे treated करा जिवो and it would be released to the other end the आमे कहबा regions. So Singapore भली हमको कौन करे, it's a small city but effort of recycle can be template for the urban area. That means Singapore जेमती water को recycle करूची, water को dual use करूची, ताको आपको हमको focus करिया पड़िबो. Okay, तो second orth आमे जदि देखिबा which is what आमे कहबा second आमे कहबा which is what created water scarce geography. तो आमको कोठी ना कोठी ड्रिप इरिगेशन कथा नहीं जो, तो वी नीड टू इम्प्रूव द ड्रिप इरिगेशन, वी नीड टू इम्प्रूव द व्हाट दैट इज आमको डिसैलिनेशन प्लांट्स जेमती रही डिसैलिनेशन जेमती इज्राइल कथा नहीं जो, इज्राइल कौन कर जॉर्डन को वाटर एक्सपोर्ट करुच्ची बिकज ऑफ व्हाट डिसैलिनेशन. तो सही भाई आमको मध्य करिया पड़िबो. ओके, डिसैलिनेशन एंड आम पाखरे अछि 7500 लॉन्ग कोस्टल लाइन्स, सो दैट वी विल हैव श्योरली विल हैव द लिवरेज ऑन दैट फ्रंट, दैट इज द जोटा मु कहली इज्राइल जेमती जॉर्डन को वाटर एक्सपोर्ट करुछि, तो सेमती आम पाखरे मध्य अपॉर्चुनिटी अछि. Done. So and it is also equally true that sustaining the aspiration of the 10 trillion GDP जदि हमको करिया पड़ियो, so that we need to have the water हमको बहुत दरकार, कारण बिना वाटर कौन हो पारियो ग्रोथ हो पारिबो नाही. तेणुक 10 ट्रिलियन इकोनॉमी कथा नहीं जो बा पोवर्टी रिडक्शन कथा नहीं जो, क्या विदाउट वाटर ना वी कांट रिड्यूस द पोवर्टी एज वेल. सो वाटर बिना कहते नहीं कि जल विहीन जगत नाश, तो ये सेमिति जदि हम कहबा, so that is why the water is foremost important resource, one of the most importance. Then we comes to the what that is the आम कहबा Nanditha Krishna, तो historians, environmentalists and the writers based in Chennai जदि देखिबा ये एथिकल्स इशू ऊपर लिखंती, खास करके religion related and I would say beliefs ऊपर ये लिखंती, I would say but belief ऊपर बहुत आर्टिकल्स लिखंती. तो दैट इज नंदिता कृष्णा. तो तांकर ओपिनियन जदि आम देखा व्हाट इज तांकर ओपिनियन कौन, तो ऑब्जर्वेशन एंड ओपिनियन जहाँ को कहबी ऑब्जर्वेशन एंड ओपिनियन तांकर दैट syncretism and 33 million deities, syncretism and 33 million deities कहते नहीं 33 कोटि देवता, ये जो कहते नहीं 33 कोटि देवता, दैट इज वाई 33 million deities. ये जो आम 33 कोटि देवता देवा देवता कथा आम डिस्कस करूँ जितेबले, तो तांको कहा कथा कि किसी देव देवता जो मैंने कि पुराना टाइम रे बा ओल्ड टाइम रे जो मानकर दबदबा थिला, जेमती कि तुम अग्नि कथा नहीं जाओ, तो से माने वर्तमान माइनर डेटीज रे कन्वर्ट होती, को मैंने माइनर थिले, सो जो मैंने माइनर थे से मेजर हो गले कि जे मेजर थे माइनर होती, तो ये से किसी एक्सट्रक्शन देते आम ताको देखा. द दैट इज व्हाट सिंक्रेटिज्म इज द ब्लेंडेड ऑफ द डिफरेंट बिलीफ सिस्टम को आम केवल मिसिकी था. सिंक्रेटिज्म मीनिंग कौन, डिफरेंट बिलीफ सिस्टम जो मिसीज इनकॉर्पोरेटिंग अदर बिलीफ्स इनटू द व्हाट एक्जिस्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल्स. तो ये आम देखा द ऋग्वेद जदि आम देखा जो आमर अच्छी ऋग्वेद एम्यूरेट्स दैट इज व्हाट एन्यूमरेट्स 33 देवास or shrines gone. तो रिप्रेजेंटिंग द प्राइमरी फोर्स ऑफ द नेचर जदि हम देखा बहुत सारा भगवान मत कहले है ना, जमती तुम डिस्कस करि परिबो कि ऑफकोर्स हम कहबा तो इंपोर्टेंस जतरो थिले सेतरो अग्नि, इंद्र, जो माने इंपोर्टेंट गॉड्स थिले ऋग्वेद टाइम रे है ना. द पॉपुलर डेटीज थिले से माने वर्तमान आम कहबा कोन द पॉपुलर डेटीज ऑफ द टुडेज आर द टू Vedic gods, that is the Vishnu, and combined with the non-Vedic Narayan, and the Rudra, combined with the non-Vedic Shiva. So Vishnu and Rudra, they are the only, I would say, the what two deities from that times those are getting what more or more abided, or I would say more respected, or they are the major one. किंतु मेनी फॉर्म्स जोटा कि अदर फॉर्म्स होते छोट छोट भगवान माने थे जो मानक माइनर गॉड से कहते,
एसबू माइनर को रिटर्न आगे जमती तुम अग्नि कथा नहीं जहाँ को आम कहे कौन अग्नि कथा बर्तमान से द्वारपाल हो रही नवग्रहर पार्ट हो जाइए तो ये सी कहते कि जदि आम देखा कि किसी भगवान अच्छा जो मैंने कि बर्तमान माइनर गॉड कन्वर्ट होती बाकी जदि तुम आम जमती से नॉर्थ जाभा कही सुमात्रा कही तो ये सब रिजन किसी से देती जमती आम सन टेम्पल्स मधेरा कथा नहीं जाओ तो ये सब जमती आदि शंकराचार्य सी कह कथा रेकग्नाइज के 6 प्रकार कल्ट अनुसार जमती सौर्य कल्ट ओके विष्णु शिवा सौर्य गणपत्य एक सांख्य एंड दैट इज बट जहाँ कम कह कार्तिकेय तो शंकराचार्य अनुसार सूर्यगढ़ जमती खजुराहो देखा जाए मधेरा ग्वालियर ये सब ना इज बट दैट इज द डिमोटेड टू दैट इज नवग्रह ताले सेते बळे हम कहबा सन गॉड जी एते पावरफुल थे बर्तमान डिमोटेड है कि से कोथरे नगर नवग्रहर पाठ हो जाइछन्ति तो ये से देइछन्ति तांकर पूराटा देइछन्ति बाकी एथरे आउ किछि माने जदि देखियो कि रिलीजन एंगल ही खाली देन आम आसवा एनजीओज वाला टॉपिक को तो जो एनजीओज वाला टॉपिक अच्छी मुझे सर्ट रे कहूँ आपको कारण एत बड़ आर्टिकल्स पढ़ी आमको एसेंस दरकार देख प्रभु चावला ये जड़े बहुत भल राइटर्स एंड हिज वोकैब इज प्रिटी गुड प्रभु चावला तांको कहया कथा कि जो एनजीओ माने जो माने एनजीओ करूछंती एनजीओ किए करंती जो माने एजुकेटेड लोक करूछंती जो माने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से माने करूछंती तो जो माने तमे देखिबो ए माने कहउछंती निजको कनसाइंस इंडस्ट्री बोली कहउछंती एमान को कोन कहउछंती कनसाइंस इंडस्ट्री एनजीओज आर व्हाट दैट इज द कनसाइंस इंडस्ट्री बोली माने कहउछंती के निजे से माने बहुत लिबराल से माने देश पई बहुत काम करछंती कनसाइंस इंडस्ट्री पार्ट बट प्रभु चाला कहया कथा ये जो एनजीओ मान ऊपर बर्तमान रेड होची तुम जानिबो बर्तमान मोदी गवर्नमेंट जो करूछंती आर रिजन अच्छी से कह कहते ये जो एनजीओ कंपनीज मैंने कहते जो मैंने 5 स्टार होटेल बसुँच 5 स्टार ग्रुपिंग करूँ ये एनजीओ मान जो मैंने क्लेम करूँ आम क्लीन एनवायरनमेंट करूँ आम जेंडर इक्वालिटी आनबू आम पोवर्टी को दूर करूँ ये सब कथा जो मैंने कहते मोस्ट हेवी हिटर्स एनजीओज आर द ग्लोबल मैलिशियस मैशनरीज दैट इज मैशनरीज हु कलेक्ट द व्हाट महुआ टू सस्टेन देयर लग्जू लाइफ तो ये कहवा कथा ये जो मेजोरिटी ऑफ द एनजीओज ना ए माने होचंती करोड़पति ए माने होचंती ओनली निजर इंटरेस्ट पई करूचंती नॉट फॉर द सोसाइटी जो कहउचंती एनवायरनमेंट पई ये सब पई करूचंती ए माने नो ओके ए माने एग्जैक्टली निजर खाली लग्जरियस लाइफ को मेंटेन करया पई हला एनजीओ करी की ताधर बेनिफिट नै कि चलुचंती तो ये हला तांको कहया कथा से से कहते यूनियन होम मिनिस्टर जो मैंने कि कौन कर एफसीआर एक्ट तो जानते फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट सो से कह कथा जो एफसीआर अंडर तुम जान कि एफसीआर अंडर बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन अच्छी बहुत सारा एनजीओज लाइसेंस को कैंसल कराई से अकाउंट को फ्रोजन करा जो थर कि मोदी विरुद्ध में कहते बीजेपी विरुद्ध में कहते प्रभु चावला कहया कथा कि ठीक अच्छे जो मैंने यूएसए जर्मनी ये सब यूरोपियन यूनियन जो फाउंडेशन अच्छी जो मैंने कि इनवल्व अच्छा ये सब जो आम एनजीओज मान को फंडिंग करुँच पॉलिटिकली डिस्टेबिलाइज करने चाहते और निज अनुसार गोटे पॉलिटिकल लीडर को ठिया करने चाहते जे कि यूरोपियन बा यूएस रो कथा शुणु ओके तो ये सब जदि आम कह जो कि कहुई नॉट दैट इज व्हाई आम कह जो आमर सीएसआर फंड सब आसूची दैट मीन्स आम देखिपर 25,000 crores collection ହେଇଛି एनजीओज माने कलेक्शन करछंती दैट मीन्स कैन इमेजिन कि हाउ मच ऑफ मनीज इज कमिंग टू द एनजीओज एंड दीज मनीज ये सब मनी कोथरे खर्च होची ना जो माने एनजीओ करछंती निजर लग्जरी लाइफ मेंटेन रे खर्च करछंती एंड दे आर थिंकिंग दिस इज कोन दिस इज एन व्हाट लाइक द इनकम सोर्स बोली कि माने करछंती तणकरी ऑथर कहया कथा प्रभु जाला कि एई भले एनजीओज मान को आमे कोन करियो बैन करिया दरकार बा जो माने तो दैट इज वाई एफसीआर एक्ट अंडर कौन कही द रजिस्ट्रेशन ओवर 7,000 एनजीओज इधर हैव बीन विथड्रॉन और लोड दैट इज द लैप्स इन द पास्ट 5 years
तो लास्ट 5 इयर्स जो तुम एफसीआर एक्ट आसला आमेंडमेंट है एक्ट आसला तो बहुत सारा आमको बॉलीवुड कथा नहीं जो सिविल सोसाइटी कथा नहीं जो एनजीओ कथा नहीं जो है ना एनजीओज आर स्ट्रीम्स देयर वेरियस दैट इज व्हाट सेल कैकिंग व्हेन इट मतलब आम कहवा ये सब आमको देखा तो से आमको क्रैक करिया पड़छ दैट इज व्हाई दे आर नॉट हैप्पी विथ द मोदी गवर्नमेंट सहित हैप्पी नुह जोटा कि है ना एनजीओस मान को देखभाल करने गोटे पोर्टाल आसाला से पोर्टाल नाम लिखी दिया ये दिस इज व्हाट दैट मीन्स आम से पोर्टाल नाम देखा तो ये पोर्टाल को आम कहे दैट इज द कलेक्शन इनफॉरमेशन गिवेन्स तो कौ थे करवा से पोर्टाल्स करवा तो दैट पोर्टाल जब आम कह दर्पण दैट इज व्हाट एनजीओ दर्पण तो ये सब एनजीओ हिसाब रोवर 1.1 लाख एनजीओ रजिस्टर कर एनजीओ दर्पण रे इनको पैसा आसूँ कुआडे कुआडे जाऊँगी सो वी विल हैव ए क्लोज लुक ऑन दैट तेणुक ये सब दर्पण कराई फिर भी से जना देखला कि फिर भी जना पड़ा कि बहुत सारा एनजीओ अच्छी जो मैंने करप्शन प्रैक्टिसेस कहते जो मैंने आम कह फॉरेन फंडिंग नौ बट ताकू बट दैट मीन्स ताको रेगुलेट करा बहुत जरूरी अदरवाइज एम कौन कर नुइसेंस क्रिएट करोची अनुसार इट्स अबाउट पॉलिटिकल चैरिटी जहाँ नियरली ऑल द इंडियन चैरिटी जहाँ कह ये सब पॉलिटिकल चैरिटी पॉलिटिकल पर्पज आसूची किंबा आम कह कौन देश को डिस्टाब्लिश इनस्टाब्लिश करने आसुँच तेणु मोस्ट ऑफ द एनजीओज हैव बीन व्हाट स्पेंडिंग मोर ऑन एडमिनिस्ट्रेशन रादर दैन तो आम कह जो पर्पज आणुंट से पर्पज खर्च कर निज एडमिनिस्ट्रेशन अधिक खर्च कर दैट इज व्हाई द लास्ट कंक्लूजन से कहते चैरिटी बिगिन्स एट होम मोदी जी इज एंश्योरिंग एंड दैट इज व्हाट तो से ये आमको देखा तो किसी लोग कहते बीजेपी मतलब हाँ बीजेपी एम को ये कर आइडियोलोजिकली तो ये एमती मोदी को मतलब मोदी विरुद्ध जहाँ भी हो सो दिस इज ऑल अबाउट आम एनजीओ वाला आर्टिकल्स देखले दर्पण टा मन रखा एनजीओ दर्पण इश्यू कौन एनजीओ आम डिस्कस कले कि जो आसूची एमाने मल्टी लेयर एमाने ऊपर गोटे कथा कहती ऊपर गोटे फेज भीतर आउ गोटे फेज तो मल्टी लेयर सब ये सब कंपनी ठीक अच्छे तो आज आर्टिकल्स को ये डिस्कस करवा नेक्स्ट आर्टिकल्स आम जो रही 9 तारीख डिस्कस करवा आगू